Hello, Assalamualaikum students. How are you? Fine, perfect. Uh, in the last class, we have to discuss about the multiplication of the matrices. Now I'm showing the presentation where you have done from there, and revision from some time. I revise it very quickly कि हम यहाँ थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें और जो है वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आ जाएं. ओके, so now first of all we have to talking about in the case of multiplication. So in the case of multiplication, the thing is this, that the rule of the multiplication, this is the rule of the multiplication. Okay, this is not a हम ये कहेंगे कि इसको कि इस रूल को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं होगी. ठीक है ना. तो मल्टीप्लाई कैसे करना है वो अलग चीज है, वो नया टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक था हमारा कोई, उसके लिए हमने क्वेश्चन किया हुआ है. So the rule is this: the columns of in matrix A should be equal to the rows of matrix B. Okay, matrix A must be equal to the rows of matrix B. Its meaning क्या हुई? कॉलम्स कहाँ हैं? A का कॉलम क्या है? कितने कॉलम्स हैं A के? हाउ मेनी कॉलम्स इन A? कंफ्यूजन थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही थी, तो इसको भी हमने क्लियर किया था. वी हैव डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस. सो वी कैन से the columns of matrix A, how many columns in matrix A? There are 2 columns in matrix A. And how many rows in matrix B? There are 2 rows in the matrix B. Okay, so that's why it can be 2 columns of A and 2 rows of B. That's why it is multiplication should be possible. Okay, is there any confusion? This is the formula. कि how to कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ठीक है ना. हाउ टू मल्टीप्लिकेशन, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था इसी क्वेश्चन को. तो हमने कहा था कि हमारे पास मैट्रिक्स ए ये रहा 2 4 4 1 एंड बी मैट्रिक्स बी इज 5 3 0 1. सो we conducted is that the columns of A and rows of B are same. Columns in A, number of columns in A is 2. There are 2 columns in A and there's 2 rows in B. तो solution में possible कि अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से काम करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन A और रोज इन B जो है वो अगर बराबर हो तो मल्टीप्लाई हो सकता है. ठीक है ना. तो अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A. So A multiply by B, the matrix A is here, and multiply and matrix B is here. So first thing is this, that how to calculate, how to multiplication of the process. ठीक है ना. तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना कैसे. पहले हम बात कर रहे थे कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा. पहले हम बात कर रहे थे मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा. अब हम बात कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होगा. They are both are the different things. So now we check that how to calculate this thing. First row multiply by first column. These are the position. They are the position of the matrix. This is the position of A. This is the position of B. This is the position of C. This is the position of D. In the position A, we have row 1, yani first row in the first matrix multiplied to column of second matrix. Column 1 on second matrix. It's mean कि पहली जो वैल्यू है वो फर्स्ट की है, फर्स्ट मैट्रिक्स की है, एंड जो कॉलम है वो हम किसका चेक करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का. तो यू कैन सी दिस by using this formula. You can see there first row
first row multiplied by first column. First column. The direction it shows that the first row multiplied to the first column. So you have to discuss that the two fives are first value multiplied to first value, second value multiplied to second value. We can't multiply by first row into the first row. तो देयर इज नो R1 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 नहीं है, ये क्या है R1 C1. तो इट्स मींस कि R1 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, C1 से होगा. फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई टू द सेकंड वैल्यू. ओके, according to this formula first value again multiply to the second column. It's mean change क्या हुआ, कॉलम चेंज हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या क्या C2 आ गया. ये फर्स्ट रो है, इसीलिए फॉर्मूले में आप देखें यहाँ पे, आप चेक करें, आप यहाँ पे मैं चेक करवाऊंगा आपको. ये देखें आप, मेरा लेजर देखें, ये R1 C1 फर्स्ट रो है, तो यहाँ भी R1 R1 है, ठीक है ना. ये सेकंड रो है तो इसलिए R2 R2 है. ये फर्स्ट कॉलम है तो ये C1 C1 है. ये सेकंड कॉलम है तो C2 C2 है. तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए यहाँ पे आप इस बात का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है. यू must be focused on this formula. Okay, now we calculate R1 C2 R1 C2. It's mean कि कॉलम चेंज हुआ है, इट्स मीन कॉलम चेंज हुआ है. तो कंडीशन क्या होगी, R1 सेम R1 2 4 multiplied to 3 1. It's mean 2 multiplied by 3 4 multiplied by 1. First value multiplied to the first value and the second value multiplied to the second value. ठीक है ना, यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक. ओके, सो नाउ we calculate this matrices. 2 5s are 2 multiply by 5, 4 multiply किससे होगा, 0 से, 4 multiply by 0. At the condition there are too many values in the first rows, so every value should be multiplied. After that you must be apply the sign of addition. जब आप एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो फिर जब नेक्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो बीच में साइन किसका आएगा, एडिशन का आएगा, ठीक है ना. तो फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट वैल्यू, बट before using the second value multiplied to the second value, first of all we apply the sign of addition. Okay, so that, and then you will be calculated, you will be multiplied the 4 multiplied by 0, 4 multiplied to 0. Now first row second column, first row second column, first row, what is first row, 2 4, and the second column is 3 1. It's mean 2 multiplied by 3 and 4 multiplied by 1, 2 multiplied by 3, 4 multiplied by 1. Now applying second row, second row is this, that R2 multiplied by C1, R2 multiplied by C1. Where is R2, where is R2, this is the R2. The value of R2 is 4 1, the value of R2 is 4 1, and C1 the value of first column is 5 0. It's mean 4 1 multiplied to 5 0. In this case first value multiplied to the first value, second value multiplied to the second value. 4 5s are 4 multiplied by 5, 1 multiplied by 0, 1 multiplied by 0. So the position is here, the position is here. R2 C1 की जो पोजीशन है वो ये पोजीशन है. इस पोजीशन को यूज करोगे तो जो भी आंसर लिखोगे वो यहीं पर लिखेंगे हम, ठीक है ना. अब जो यहाँ पे बात हो रही है R2 multiplied by C2, now column is changed, column has changed, ठीक है ना. अब यहाँ पे column क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो you use this formula, R2 multiplied by C2, R2 multiplied by C2. Where is R2? R2 is 4 1 and C2 is 3 1. You must be observed that 4 multiplied by 3 and 1 multiplied by 1. So 4 multiplied by 3, 4 multiplied by 3, 1 multiplied by 1, 1 multiplied by 1. Is this clear? Is this clear? ये चीज हमने लास्ट टाइम की थी, उसी चीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना.
Now moving to the next slide. Uh, the last step before this slide is in front of you, and now you can see this, that the condition of values. What is the values of the answer? आंसर शो हो रहा है आपको? अब देखें, 2 5 जा 10, 4 0 जा 0, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 20, 1 0 0 0, 4 3 जा 12, and 1 1 जा 1. Now furtherly we have to done to add up both values. This is the answer of yours. Okay, clear? This is the first question we have to discuss about in previous class. Now I'm using to the new question to you. Okay, so you must be here with me, and now I'm move to the next question. What is the next question therefore? If the value of A is 2451, 2451, and the value of B is 532014, 532014. So आप मुझे बताएं ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है? इज दिस द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट? मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है? गुड, शाबाश. You can be chat you can use your chat box by answering for answering. Okay, क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब हमने ये देखना है कि क्या ये दोनों जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि भी नहीं मल्टीप्लाई हो सकते. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू से दैट द कॉलम ऑफ A, हाउ मेनी कॉलम्स ऑफ A? 1 2, there are the 2 columns in A, 1 2, and there are the 2 rows in B. There are 2 rows in B. That's why multiplication is possible. Okay, clear? Everything is clear from here? Now I repeat it again. How many columns in A? There are 2 columns in A, 2 5 4 1, and there are 2 rows in B, 5 3 2, this is the first row, 0 1 4, this is the second row. Okay, so you can see that the matrices are same. The number of columns in A is 2, the number of rows in B is 2, and that's why the multiplication is possible. Is it clear? Now multiplication, according to this is the higher multiplication in your course, 3 by 3. ठीक है ना? तो इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो सकती है. तो फर्स्ट वी A मल्टीप्लाई बाय B, A की जगह पे A की वैल्यू, B की जगह पे B की वैल्यू. नाउ व्हाट्स करें क्या? अब करना क्या है? R1 multiplied by C1. This is the first position in here. Where is the R1? This is the R1. And where is the C1? This is the C1. So R1 multiplied by C1 is here. First value multiplied to the 5. Second value multiplied to the 0. So R1 C1. Now what's the next value? R1 C2. Same row multiplied to the second column. Same row multiplied to the second column. And after that, the third row, the same row multiplied to the third column. Okay, जब तक एक रो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाए उस वक्त तक आपने सेकंड रो पे मूव नहीं करना. ठीक है ना? दिस इज द वेरी क्लियरली सेड दैट. आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत क्लियर होनी चाहिए. मैंने क्या बोला? आपको ये बात बोली, मैंने कहा जब तक एक रो फर्स्ट रो
तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई ना हो जाए उस वक्त तक आपने रॉस चेंज नहीं करनी. तो you should be see that in here you can be see first I multiplied 2 4 2 4 first we by using the laser in here 2 4 multiplied with the 5 0. So 2 multiplied by 5, 2 multiplied by 5, 4 multiplied by 0, 4 multiplied by 0. Now the second thing is first row multiplied by second column, first row multiplied by second column, first value multiplied to the first value, second value multiplied to the second value. So it's mean 2 3s are 2 3, 2 multiplied by 3, 4 multiplied by 1, 4 multiplied by 1. This has been done in R1 C2. Okay, what is the next step? So R1 multiplied by C3, R1 multiplied by C3. The same row of A multiplied to the the third column of B. It's mean 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 2, and 4 multiplied by 4, 4 multiplied by 4. We have done first row. We have done first row. R1 C1, R1 C2, R1 C3. Okay. Now you can be calculate R2 C1, R2 C2, R2 C3. So R2 C1, where is the R2? What is the R2? Second row of A. And what is the C1? First column of B. First column of B. R2 represent the second row in the first matrix, and C1 represent the first column in second matrix. So multiplied. Second row multiplied by first column. 5 multiplied by 5, 5 multiplied by 5. 1 multiplied by 0, 1 multiplied by 0. Okay. Now R2 multiplied by C2. Second row multiplied to second column. So 5 multiplied by 3, 5 multiplied by 3. 1 multiplied by 1, 1 multiplied by 1. Okay. This is the position of R2 C2. So now R2 C3, R2 C3. So R2 is 5 1, C3 is 2 4. So you can be multiply 5 multiplied by 2, 5 multiplied by 2, and 1 multiplied by 4, 1 multiplied by 4. Okay, यहाँ तक clear है? Now by using third thing, R3 multiplied by C1. Is there any third row? यहाँ पे कोई थर्ड रो है? यहाँ पे कोई थर्ड रो है? नहीं है ना? तो इसका मतलब थर्ड रो वाली कोई भी वैल्यूज यहाँ पे नहीं आएंगी. थर्ड रो अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थर्ड रो की कोई भी वैल्यूज नहीं आएंगी. क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? कोई भी क्वेरी है तो पूछ लिया मुझे वहीं पर रुक के आपको मैं जवाब दे दूंगा. वीडियो पॉज करके मैं आपको यहीं पे भी जवाब दे दूंगा. जो भी आपकी क्वेरीज हुई आपका आंसर जो है वहीं पे आपको दे दूंगा. ओके, सो नाउ कंटिन्यू टू द टॉपिक. This is the last step before this slide. I copied all of the things in here. Now, just in front of you, it's just calculation, multiply, addition, subtraction. This is the thing. Is this? There are no problem. I think so. Is this a 5 to 5 the 10, 4 0 the 0, 2 3 the 6, 4 1 the 4, 2 2 the 4, 4 4 the 16, and then 5 5 the 25, 1 0 the 0, 5 3 the 15, 1 1 the 1, 5 2 the 10, and 1 4 the 4. This is your second answer. Done. Okay, done. Great job. Okay, guys.
Is there any problem you had to discuss with me? And now, uh, what I said about to you, कोई confusion यहाँ पे? Okay, I'm giving you some tasks. I'm giving you some tasks. Okay. Uh, बल्कि I will upload it task on your classroom. You can be done. You will be done this topic by there, and you must be submitted on time. Okay. Inshallah, we will meet on the next lecture. Until then, Allah Hafiz. Take care of yourself. And stopping my lecture from here. Is there any query till now? Is there any query from your side? No. Okay, clear. Now, uh, till then, for the next class, and remember me in your prayers because it's very important for me. That's why. Take care. Allah Hafiz.